So, last question I would like to ask you, like, why like you chose TGC, like Navy Short Service Commission over TGC Permanent Commission? First was ki I was working in corporate and I want to explore, like I want to serve the nation. But the question is ki after coming to IIT, I also had it in corporate. So now the I thinking here, if after 10 years I have a chance, and ये 10 साल बाद क्या होगा? The timing changing very fast. 10 Exactly. साल बाद क्या होगा किसी को नहीं पता. And अगर मैं पीसी ले लेता हूँ, then leaving the service will be very difficult for me. क्योंकि जितना मुश्किल है फौज में घुसना, उससे ज्यादा मुश्किल है निकलना फौज से. Correct. They will not leave you. And है ना, वो बहुत मुश्किल है, ये मुझे आने का पता था. They will not leave you. तो मैंने सोचा कि if I have a chance, take a chance in your hand. अगर क्योंकि एसएससी के बाद पीसी भी मिलती है ना, if you want you can get it. तो Exactly. अब मुझे लगा ये देखते हैं 10 साल बाद क्या होता है ना. मैंने दोनों जगह काम किया है, तो आई बस ऑप्शंस ओपन रखने के लिए मैंने सोचा कि ठीक है. एंड सेकंड चीज, आई गेट अ वेरी गुड ब्रांच इन नेवी. इट्स अ नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर. So, Jain Sarsh, how are you? Fine, fine. How are you? I'm great. I'm great. So, Sarsh, first of all, I would like to congratulate you on your recommendation that you recommended twice, one from Allahabad board and one from Navy board of Indian Navy. Yes. Okay, okay, Kolkata. So, ladies and gentlemen, today we're going to interview Sarsh and we're going to through his journey, how he able to get two recommendation. It's difficult for everyone to get two recommendation. He got like one for Army for TGC and one for Navy. Okay, so Sarsh, we would like to know about your experience. Okay, first, we would like to know a little bit about your background, especially for the education and how many previous attempts you have been, like number of attempts, number of screen out, number of conference out, and that's all. Yeah, please, you can start with this, then we will forward with the multiple questions. So I my first SSB in after 11th only, like when I was in 12th. So my education qualification is I am from Muzaffarpur, Bihar, and uh, my plus two was from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Muzaffarpur, Bihar itself. And then I went to IIT Ropar, and before I was not recommended in NDA. So once I tried for NDA, but I was conference out in AFSB Varanasi. So I went to IIT. I gave J advance and I got a very good rank. Not very good, but that much good I can go into IIT. So I went there, and then I studied there. When the last from the second last semester, I started applying for these SSBs and armed forces entries. So I first applied for serious entry. I was not able to qualify the written exam. So I got very much demotivated there, yeah. Because in ID you are doing BTech also, and the assignments, these all things are very, I was not getting too much time. So I got a placement in Reliance Industries, Geo 7. So I went for work in Mumbai. So I was working there. Then again I started, अच्छा अभी time है. Now I can, because my work from office starts from 10 a.m. तो कुछ तो मैं सुबह उठता था भाई. I used to wake up 4 at 5 a.m. in the morning, and then from 4 5 or on one stretch I used to study. And then after breakfast I would go for office, and then after coming 1 or 2 hours, because ऑफिस से आने के बाद फिर पढ़ने वढ़ने का कुछ मन नहीं Correct, करता. होता है. मेनली ऑफिस आने के बाद आई यूज टू गिव योर लाइक प्रिपरेटरी सेशन only. तो और वो भी लेट नाइट्स होते थे. So sometimes it was very difficult for me also at 11, because I have to wake up again in the 4 in the morning. So it was a bit tough for at that point of time. So first I gave again I gave TGC entry, and then while preparing for SSB, I was very much clear that I will not able to qualify the written entry, especially for CDS, because while working and giving almost 9 10 hours every day in office, and giving your time somewhere else and studying, then especially on SSP, general knowledge, other things which are very new for me, social studies, because at the time of NDA you kick out in maths, yes, things change. The level of social studies increase, the level of English increase. So and it need time. So मुझे लगा कि यार अब direct entries करनी पड़ेगी. So permanent commission entries was two, one TGC entry and one from FCAT, and rest of the short service. So I started giving TGC entries. I went for two TGC entries and one FCAT entry. One FCAT entry I was screened out, and one TGC entry I was conference out. Next TGC entry I got recommended in TGC 139.
And then after I got जो थे तुम्हारी ये जो एंट्रीज थी इसमें कितने टोटल अटेम्प्ट्स कितने किए तुमने? हाउ मेनी अटेम्प्ट्स एसएसबी के total टोटल? by four attempts थे मेरे को। अच्छा, 4 में से कॉन्फ्रेंस आ रहे हैं, सारे कॉन्फ्रेंस हैं? नहीं, एक स्क्रीन आउट था, 3 कॉल। अच्छा, और कोस्ट गार्ड का नहीं है इसमें कोई भी 4 में से? एक एक कोस्ट गार्ड था अपार्ट फ्रॉम दिस, वन फॉर कोस्ट गार्ड तो आल्सो it was एंड आई वाज also- कॉन्फ्रेंस आउट। हाँ, देयर आल्सो आई वाज कॉन्फ्रेंस। तो मतलब इन फिफ्थ अटेम्प्ट यू क्वालिफाइड योर एसएसबी, राइट? एसएसबी इन लास्ट अटेम्प्ट वाज माय नेवी अटेम्प्ट एंड इन थर्ड अटेम्प्ट कोस्ट गार्ड बीच में था, टीजीसी और इसके बीच में, आफ्टर रिकमेंडेशन आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट इन कोस्ट गार्ड। Okay, so in which year you was in IIT Roped? What is the graduation year? 2018 2022 इसमें ग्रेजुएशन। 2018 2022. Okay. Fine. No, actually, I've been there. I came for some conference. 22. ओके, I did open it for 22। mechanical department. I came there for some conference. This ISME conference organized by IIT Roped. Okay, so I've been to your canteen and every places. We stayed in the hostel. I don't know which hostel, but you got a room. So it's a very big. I was in Satluj hostel. You have been stayed in Satluj hostel only. Maybe Satluj. Yes, Satluj only. Maybe we were there. Satluj. We didn't know each other, but okay. हाँ, Not a you have problem. been, because at that time I was in fourth year and fourth year guys doesn't too much interact with department, उनका उठ गया होता है वो। We already got placement in third year, तो उसके बाद हम प्लेसमेंट होने के बाद तो डिपार्टमेंट नहीं जाते, हम क्लास नहीं जाते थे, प्लेसमेंट होने के बाद डिपार्टमेंट क्या करें। आईएसबी की होती थी, but Any the okay, purpose in going IIT so in the whole is to get placement, that's it। placement good इसके बाद package. कोई Yes, डिपार्टमेंट। everyone's dream is like that only. Yeah. Like some people, very few people research and all, but okay. So sir, now आप मुझे बताओगे कि like how was your experience with your like we have three parts like psych and GTO and interview. So we'll start with your psych part. Okay. So how you approach the TAT, BAT, SRT, SD? Like what was your approach from your previous attempts and to this attempt to make to twice recommendation? What was your approach? Like you have taken some coaching from anywhere? Like any guidance from anybody which helped you to understand the reality of the SSB and all, like how it was? So in first SSB, like my thought was if you're not able to complete the psych, you will not get recommended. So my approach was पहले खत्म करना सबका सबको। ठीक है। So I practiced more than 300 stories. Every day I used to write 300? 36 stories for, हाँ, मुझे याद हो गई थी पिक्चर देख के, I was like do it। बना दो स्टोरी। तो वो होता है ना कि जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना, सुबह शाम 10-10 12 घंटे पढ़ाई कर। तो आई थॉट ये भी तो एग्जाम ही है, गो विद दैट अप्रोच। तो मैंने लगा डाले सब कुछ। But still, 300 400 pictures। 400 pictures are like, what I believe, I don't think so. Our maximum candidate will do that, yeah. तो सी द प्रॉब्लम, वो सुबह जो 5 घंटे करता था वो मैक्सिमम साइक ही होता था। जीटीओ का घर पे कर नहीं सकते हम। आई वाज Correct. स्टेइंग इन मुंबई, कोई जीटीओ का था नहीं। Hmm. इंटरव्यू के लिए आई हैड सम फ्रेंड्स जिसके इंटरव्यूज लेते देते थे, वी हैव यूज्ड टू एक्सचेंज। बट द साइक पार्ट वाज लाइक आई वाज लाइक ये तो रिटन एग्जाम है यार, ये दे चुका हूं मैं पहले बहुत सारे, आई कैन डू इट। एंड आई वाज सो रॉन्ग ऑन दैट पार्ट। आफ्टर सेकंड कॉन्फ्रेंस आउट आई बिलीव नहीं यार, ये कंप्लीट करने से तो रिकमेंड नहीं होना होता, तो मैं 2 बार हो चुका होता। कुछ So I गड़बड़ was है। not, हम्म। कुछ गड़बड़ है, तो कंप्लीट करने से नहीं होगा। देन आई कॉन्टेक्टेड वन साइकोलॉजिस्ट एंड she was somehow connected to Tito। Don't disclose her name, right? No, Same lady? I can't disclose the name। Same lady? No, I can't disclose the name। same lady। Okay. So I somehow I mailed her almost 50 times, and you can help because I doing PhD and she was, I think, attending some session or some symposium type of thing। I heard उनका email मिला उधर से, I mailed her कि I want her help and she's like no, I don't do this and I know how this works but I don't do this। I'm like ma'am please। तो फिर she said okay। Again she gave me time 11 बजे रात के बाद। Three after that मेरे बच्चे सो जाते हैं। Commitment मेरा देखिए, फिर guy वही is हो गई। serious or not about his goal, but 50 days डाले हैं तुमने तो like काफी जिद्दी रहे होगे तुम यार। हाँ,
वो मैंने वो मेल्स, मतलब मेल तो एक ही डाला, उसके बाद जेंटल रिमाइंडर, जेंटल हाँ, सॉफ्ट रिमाइंडर, फॉलो जेंटल अप रिमाइंडर, लेने लेना है। फॉलो अप डालते जा रहे यार, कभी तो रिप्लाई करेगी मैम, एंड शी वाज लाइक फेड अप। वो ऐसी लाइक कि फिर उन्होंने बोल के बोले ओके 11 बजे रात के बाद, एंड What she told you, तो like, what mistake in your previous attempts, like, क्या हाँ, क्या करना she gave me a different approach. She first of all she told me do one thing. She gave me an exercise. Write all the incidents every day you see in around you. है? Like when you go to from your flat to from home to office, what you see? A laborer is working. You interact with your mess wala. You interact with your maid. सब लिखो. हम्म, Everything. Write everything on your paper and disclose it to me. And I wrote almost 50-60 incidents in 1 week. Then I disclosed. Then उन्होंने सॉर्ट किया उसको कि किस किस पे स्टोरी बन सकती है. वी हैव नॉट डिस्कस टिल नाउ पिक्चर, हमने पिक्चर ही डिस्कस नहीं किया अभी तक. उन्होंने बोला कि पहले स्टोरी बनाएंगे तुम्हारे हम्म, लाइफ से रिलेटेड, तुम्हारे आसपास, एंड कंप्लीटली रियलिस्टिक होनी चाहिए. द मोमेंट यू, द अप्रोच ऑफ हर की, द मोमेंट यू सी द साइकोलॉजिस्ट विल सी योर पीआईक्यू एंड सी योर स्टोरी, उसको लगना चाहिए तुम्हारी है. ओके, हाँ, वो क्योंकि तुम पीआईक्यू में वही लिखोगे जो तुम्हारा है, और तुम एग्जैक्ट अपने आसपास की स्टोरीज वही लिखोगे जो तुम देख रहे हो. हाँ, तो आपका राइट एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है, ये चीज बहुत मैटर करती इन्वायरमेंट इफेक्ट. हाँ, तो अब उसमें फिर नेक्स्ट वीक उन्होंने मुझे टास्क दिया कि राइट अबाउट योर बैकग्राउंड. लाइक तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी माय मॉम इज अ टीचर. है। ओके, तो तुम्हारी मॉम एज ए टीचिंग में वो आती है तो क्या करती है, हाउ यू हेल्प her. तो उसके बाद उन्होंने फैमिली से 15-20 सिचुएशंस बोले कि ये सिचुएशन नोट डाउन करो एंड सी डिस्कस स्टोरी रिगार्डिंग वन इंसिडेंट वाज लाइक कि तुम वापस आ रहे थे, मुंबई में बारिश बहुत होती, तो देयर वाज रेनिंग, आई वाज वेयरिंग रेनकोट, फिर आते समय देखा कि कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं बारिश में. तो आई रोट दिस एज अ सिचुएशन कि मैंने देखा. तो उन्होंने बोला कि मेक स्टोरी अबाउट दैट, हाउ यू कैन हेल्प द वर्कर, हम्म, बिकॉज दिस इज योर रियलिस्टिक स्टोरी. तुम उसके ऊपर जो लिखोगे उसमें लिखोगे 4-5 लाइन में कि while coming to office you saw in Mumbai that some workers are working in rain. दिस गिव यू ना, दिस मेक यू क्रेडिबल कि नहीं ये बंदा ने देखा है. बिकॉज हर थॉट वाज की साइकोलॉजिस्ट को पता होता है कि तुम क्या लिख के आ रहे हो, लेकिन अगर क्या नहीं कहाँ से लिखा, टेप के आ हाँ, रहे हो, करेक्ट, तो सब पता होता है ना. वो तुम्हारी है कि नहीं, अगर वो नेचुरल होगा इट विल श्योर, मतलब साइकोलॉजिस्ट को लग जाए कि दिस इज नेचुरल. लाइक ओके, सो उस पे हमने स्टोरीज बिना, अभी तक हमने एक भी दिन पिक्चर डिस्कस नहीं किया. हमने ठीक, बस स्टोरीज बनाई है, ऑलमोस्ट 30-35 स्टोरीज हमने बनाई. मैंने पेपर पे लिखा, शी डिस्कस्ड इसको, उसके बाद शी उन्होंने मॉडिफाई किया स्टोरी को कि इसको ऐसे लैंग्वेज लिख सकते हैं. दैट वाज मेनली मॉडिफिकेशन. स्टोरी वाज माइन, शी डिड मॉडिफिकेशन कि हाँ इसमें जैसे हीरोइक दिखानी है, द फर्स्ट वन हम हीरोइक स्टोरी लिखते हैं, बट हीरोइक स्टोरी वो किसी और की नहीं होनी चाहिए. तुमने एक छोटा सा काम किया, यू जस्ट टॉक टू वर्कर्स. तुमने तुम आसपास मुंबई में बहुत एनजीओ वो काम करते हैं, लॉट ऑफ एनजीओ. तुमने बस कुछ नहीं किया, उन एनजीओ को फोन कर दिया कि यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, बारिश में काम कर रहे हैं, दे गेव देम रेनकोट, दैट्स इट. रेनकोट होता है जो रेनकोट में वो ईट ही पहुंचा. तुमको उनकी लाइफ अच्छी नहीं करनी कि हाँ उनको तुमने डिप्लोमा करा दिया ये दिस. वो द साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कि यू कांट डू दिस, डू रियलिस्टिक थिंग, एंड यू आर अ वर्किंग मैन. एज अ वर्किंग मैन यू डोंट हैव टाइम टू डू दिस. जितना मिनिमम करके तो मैक्सिमम आउटपुट ले पाओ, डू दिस. तो दिस वाज द स्टोरी. उसके बाद थर्ड वीक द मैम शोड पिक्चर्स दिखाई. पिक्चर वो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका, सारे पिक्चर देखे हुए थे. आई एम लाइक आई नो. फिर लेकिन जब इस दो दो वीक के सेशन के बाद फिर अब बोला कि नाउ कनेक्ट दिस स्टोरीज टू पिक्चर, क्या तुम्हारे लाइफ से कनेक्टेड है. उसके बाद हमने पिक्चर पे प्रैक्टिस शुरू की. तो अब जो भी पिक्चर आ रहा था, आई एम कनेक्टिंग टू दीज स्टोरी. दिस इज फ्रॉम माई माई लाइफ, दिस इज तुम तुम्हें इमेजिन नहीं करना पड़ेगा कि दिस इज फ्रॉम, क्या लिखूं मैं अपने माइंड से, तुम अपने माइंड कर. तो दिस वाज दिस. एंड अबाउट द वैट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट वाज व्हाट एसोसिएशन. कोई कोई एग्जांपल आप दे सकते हो, एनी एग्जांपल यू कैन गिव? लाइक फर्स्ट वाज द दिस वर्कर वाला, है ना, कि हम्म, तुम आ रहे रास्ते में देख रहे. सेकंड की जैसे मैं एक बार अपने फ्लैट में लॉक हो गया हम्म, खुद ही, वो चाबी शायद कुछ उसमें लॉक में प्रॉब्लम थी, मैं लॉक हो गया तो, और रात को 11:30-12 बज रहे थे. मैंने अपने उसको बुलाया, नीचे जो गार्ड होता है उसको कॉल किया, उसको फोन करके बुलाया. देन वी बोथ स्ट्रगल टू ओपन इट, मतलब जैसे तैसे करके खोला. तो लेकिन दैट्स अ वेरी गुड स्टोरी, इसमें कुछ हीरोइक हो नहीं हो, तुमने फाइनली खोला अपने गार्ड के हेल्प से. तो राइट दिस, हाँ, व्हाट इज नेचुरल, जस्ट राइट व्हाट यू आर, डोंट व्हाट मेक. इज नेचुरल, राइट दिस. हाँ, डोंट मेक कि हाँ तुम कुछ अलग कर गए. एंड वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट हर कि बोले कि कुछ हीरो नहीं बनना होता, क्योंकि तुम्हें बनाएंगे वो, डोंट वरी. They don't want heroes. They will make you hero. And a man was 7 times recommended.
SSB recommended. And she disclosed me at the last day. I am 7 times recommended and I don't do this business. You mailed me so many times, मुझे reply करना पड़ा. Hmm. And I was like, यही help कर देगी because I saw her symposium in seminar she was speaking. Hello यार, he will help me. पीछे पड़ो इनके. Okay, Sash, I think we should not discuss more about her. Otherwise, maybe she will हाँ get into उसके trouble. हाँ. But she did a And great then the second job. word association test, that was mainly वो approach same ही था उसमें. Hmm. You have to make a positive, लेकिन but you have to word में approach was like that कि the word should be related to your service, related to you and like for example movement. Hmm. So movement is very refreshing because in service you will keep moving from one place to another place. So you have to show कि Okay. हाँ तुम movement को पसंद करते हो. Okay, got the point. Hmm. So like your sentence should show कि हाँ the man likes movement. So and in service you have to move to connect these dots. पर तो ऐसे ऐसे उन्होंने connect करवाया. So it was very like SRT was again SRT में वो जो comma दे के लिखते हैं one word में answer Right. you don't have to write full word. Did this comma, did this comma. This was the approach. And SRT, the number doesn't matter. Again, the 2 times I got recommended, 4 times I were to solve 30, Hmm. 35 SRT. Okay. So this time I solved 30. I didn't solve 50 SRT. I didn't show my speed. I showed what was that You get 30 to 35 SRTs only. only. 30, 35. Okay, guys. So I think you can now get to know that he recommended twice and he only able to complete 30 to 35 SRTs. Okay. But anyway, okay. There's nothing wrong if you can attempt more or less. Like they know what they want, but like it's a real example Sar is telling you. Okay, sir. Okay. So now SD part, how we prepared about the SD part? SD part in my case about yourself or parents and about employer. So she said तुम्हारे केस में तुम्हारा जो boss होता है that will be very critical. Psychologically Important. read this because very important because तुम्हारे अपने बारे में तुम्हें वो जैसी तुम्हारी 12 स्टोरीज पढ़ेगा तुम्हारे एसआरटी पढ़ेगा एक बंदा प्रिपेयर हो गया है. नाउ वो ढूंढेगा कि वेयर ही इज लैकिंग. तो एम्प्लॉय पार्ट में व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर वर्किंग समवेयर वेरी स्टेबल. अगेन यू वांट टू चेंज. So what you think about yourself is also very much important. तो इन दोनों के बारे में प्रिपेयर किया. एंड अगेन इट्स वेरी मच ऑनेस्ट रिप्लाई कि मैं क्यों आ रहा हूँ इधर. why I'm leaving these things, why I'm my corporate job, why I'm coming to armed forces. तो इसके बारे में उन्होंने प्रिपेयर कराया. और मैंने बोला वही लिखवाया बट इन अ वेरी सटल वे. ज्यादा ब्रैग नहीं करना उसमें. हाँ मैंने ये पढ़ रखा है ये पढ़ रखा है. दे डोंट वांट चैंपियंस, दे वांट नॉट जीनियस. ऐसा कुछ नहीं चाहिए. दे आर सिंपल मैन ऑफ कमिटमेंट. दैट्स इट. है ना. वो सब कुछ दे विल डू. यू हैव कमिटमेंट, यू हैव ऑनेस्टी. मैन विद ऑनेस्टी करने जो सच सच बोल सके. एंड यू आर नॉट द फर्स्ट. आई वाज इन द फर्स्ट एसएसबी ना. मैं बस चौड़ गया था. मैं तो यू नो आईटी की छोड़ के आया हूँ. वहां जाके पता चला मेरे से बहुत थे. मेरे एकेडमी में मेरे से 6-7 लोग थे जो आईआईटी एनआईटी से आए थे. दे आर ब्लडी अर्निंग मोर देन मी. लाइक वो 4-4 साल नौकरी करके आए थे. तो दैट मीन उनके पास दे हैव हेल्प. उनके पास पैसे भी बहुत रहे होंगे इन वर्किंग फॉर 4 years एंड देन दे आर स्विचिंग. सो ओके. तो डोंट मेक दिस ऐसा क्या होता है ना सर लाइफ में ना, वी शुड अंडरस्टैंड दैट देयर ऑलवेज अ बिगर फिश इन द पॉन्ड. हो सकता है उस पॉन्ड में ना हो बट दूसरे पॉन्ड में है. एक बड़ी शार्क डेफिनेटली फाइंड समवन बिगर बेटर देन यू, मे बी टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, एनीथिंग. यू विल फाइंड डेफिनेटली समवन बेटर देन यू ऑफ योर एज आल्सो सम टाइम. सो कहते हैं ना. एग्जैक्टली. तो हाँ तो एनीथिंग हैपन एट एनी प्लेस यार. बट दैट्स अ पॉइंट दैट यू हैव रियलाइज दैट ओके यार मैं थोड़ा चौड़ में था नहीं, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू वर्क मोर. So in interview she made me like, so this was the SD part. And in interview she made me पहले ground पे आओ, जमीन पे आओ. You will able to talk. अगर you will be not on the same page, तो interviewer के पेज में जाना पड़ेगा. तुम अलग अलग बुक में जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो. No, you have to go on ground. The interviewer she realized कि you are the same candidate. Like you are not different from other who are standing on line. If you make impression that you are different, they will not. They don't want very different man with a commitment. The man was very clear. If you're a man with honesty and commitment, you'll be selected. So commitment होने चाहिए. You can do it. Or maybe she was telling me in my case because I was not very much showing the commitment. So be a possibility. maybe Could be possibility. She didn't told you everything, but okay, she did a very great job. Okay, so sir, I think we're done with this. Yeah, any suggestion you'd like to give the candidates, especially for psych part? Psych part story should be yours. Okay. मतलब वो हो तुम्हारी होनी चाहिए. और वो
इफ यू टेपा टेपी कहीं और से इंटरनेट से इन कोचिंग यू गो एंड किसी ने अच्छी स्टोरी बना एकदम पूरा, हम डीएम बन गए, हमने ये बदल दिया, समाज बदल दिया, वो सामने पता होता है यार तुम क्या कर सकते हो। द मैन हु इज टेकिंग, उसको सब पता होता है। एंड इन एकेडमी ऑल्सो द टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट डीआरपीआर केम, वो हमसे डिस्कस किए कि एसएसबी में क्या बदलाव ला सकते हैं, गिव मी सब फीडबैक। और अब ऐसा नहीं कि वो 2-4 मिनट में, दिन दिन भर चला वो सेशन, एकेडमी में चला है। हमसे पूछा व्हाट वाज योर एसएसबी एक्सपीरियंस। और जब हमने जब बात बात की ना, रैंडम बात की, वेरी कैंडिड टॉक ऑन कॉफी, देन आई रियलाइज कि यार इसको तो सब पता है। The ma'am who was heading the psychologist team in DIPR team in the Naval Academy, she was like, I know this, I also know this. And she gave us an example, these are the stories and these are the things, what do you want to change? फिर हमने discuss किया था, she knows everything, she's a genius, man. मतलब she's doing his work. उनके साथ जो टीम में लोग थे, they are they're well versed of everything. From last 7-8 years, they're sitting besides the psychologist who is checking the papers, and they're just seeing कि कैसे mark दे रहा है वो. So like I'm 7 years ago seeing how the checking done. So after 7 years, you get pen in your hand, and then you check the. So it's a very long process. The man who's sitting, who's checking your psychology paper is a great. So make your own story. Everything should be done. There should be positivity. Negative तो फिर सवाल ही नहीं उठता. The story should be positive. Not necessarily should be heroic. मतलब 12 में अगर 4-5 heroic हो चल जाएंगी, और heroic in the sense in your capacity. You can't climb a pole of 50 meters, so don't write it. है Right. ना, No, no, you're है right. ना. Okay, so they need to So be very honest when they approach the CAT patient, the psych part, very, right? very honest. Yes, sir. Now, please let us know about your GTO experience, that how we should approach the GTO. How was your experience with this, like especially for the HGT, BGT, FGT command task? Now, first we will divide into two, especially for the indoor and outdoor. So first you can start with the indoor, GD1, GD2, lecturate, and GPE. So what approach they should go, and any topic you remember GD1, GD2, then you can let us know also. Please proceed. The group discussion group discussion is three parts. One, confidence. Second, you should have content. Okay. And third, you should able to deliver in the group. And these all three can be get with the practice. Read newspaper regularly. Do practice in group, like you conduct the GD part in your group, na? In your PPT session. That is very helpful. Because, and third is confidence again come up with the practice. If you practice again and again, confidence Yes. will automatically come. So these three things, and so if you do in these three things, the GD, the internal indoor part of the GTO will, like, it will be cakewalk. And second thing is, the people say, if you keep mum, if you give very less number of points but effective points, you will get selected. Maybe this will be workful, but you have to speak. If you have point in your mind, speak up. भसड़ मच रही है तो कोई बात नहीं, सब बोल रहे तुम भी बोलो. ऐसा नहीं है ना, बिकॉज आई हैव सीन इन माय एसएसबी टीजीसी 139, ओनली वन गाय स्पोक अप. ही डिडंट अलाउ एनीबॉडी टू स्पीक एंड ही गॉट रिकमेंडेड. पूरे में किसी को बोलने ही नहीं दिया उस बंदे ने, और रिकमेंड हो गया वो. एंड द जीटीओ से, और वो रिकमेंड हो गया. ही वाज 4 times रिकमेंडेड. मतलब हर बार तो ऐसे रिकमेंड होता है. ही वाज लाइक, हाँ मेरे पास पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ. 4 times. He was try services recommended, and I was like, everybody in this has been knowing him. And eventually he was not able to join academy also. Like he got some accident or Okay, yeah, but personal thing. that I'm like, how you did this? And I was like, यार ये बोलने क्यों नहीं दे रहा है किसी को. अरे I was like, सब यही सोच रहे हैं कि अरे इसका तो गलत इंप्रेशन जा रहा है. नहीं, जो बंदा बैठा है वो तो ये भी सोच रहा है नहीं, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे. जो बंदा, बिकॉज जो बोलेगा उसी की मार्किंग होगी. नहीं, कंटेंट भी फिर दे रहा मार्किंग होगा ना, लेकिन जो बोल रहा है उसको कंटेंट भी दे रहा है, स्टोरी भी, लाइक ही इज टेलिंग he एवरीथिंग. has content, exactly. He has everything. He has content. He has confidence in speaking. And I was so yes. In TGC interview in which I was confident, I was even my group. And in the Navy, he also recommended with me that he was not in my group. I was like, thank God he's not my group. He's not able to give me chances. I was like, okay, so speak up. Okay. It's very necessary. You have the confidence. You have content to speak. In GD part, you just have to, because these three things you practice on that, and confidence and content you can get from the the session you conduct in the PPT session. It was helpful for me because in the last 1 month I attended that session, and that was very much helpful. And the tie part, because that's very important. At that time I was like, यार क्या होना है, tie बोलता है, रात को 11 बजे होता tie पहन गया. At that time it was like, at that time I was like, yeah, but
then I realized, nahi, it is important because the moment you sit on that chair, na, in the inside the room in front of GTO, then you realize कि नहीं, after a very time everything changed. है ना, you start to behave very good, you start to behave according to light thought psychology. So नहीं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है very सच much में। important. मैं जैसे बैठा तो मैं क्लास में टाई शर्ट के क्यों बैठा था यार? यू फील दैट एनवायरनमेंट ना, आपको लगना चाहिए वो सराउंडिंग में जिसमें बैठे हो, यू आर कमिंग फॉर देयर ऑफिस सिलेक्शन पर्पस। आपको लगना चाहिए रियलिटी Yes, है। रात में 1, 11, 12 बजे पुशअप भी लगवा रहा हूँ और फिर टाई पहनवा रहा हूँ, वही वही तो बंदों का जो माइंड फकअप होता है कि यार क्या करवा रहा है, गाली बकते होंगे ऐसा नहीं है, बट आफ्टर वन से रीच टू 7 डे ना, लास्ट डे जब पहुंचते हैं, दे विल बी रियली हैप्पी यार। उधर सर कुछ तो चेंज आया है, मैं बात बाकी तो देखते रहेंगे, रिकमेंड होंगे, बात की बात है। ओके। वही। Okay, तो no, not a problem. Okay, now that's a GD part. What about so lecturate? Lecturate also stands for the same thing, same points. हाँ, lecture also same point. And lecture that there are 4 5 topics will be there. First topic will be very hard, and from the second third topic, if you're reading newspaper regularly, you'll able to speak up 3 minutes. That's not very the in GD in lecture part. The most important thing is confidence. To stand up, speak for 3 minutes continuously is a challenge because the GTO is sitting just in front of you. You have to see GTO also. You can't see like this and speaking. You, you have to see, Right. you have to make eye contact to other one also. So the confidence matters. So either you speak up in front of mirror or in front of, because I used to speak up in my meeting. In my corporate only, this is a chance. Let's speak up. My team leader was there. I asked to what are the points you have to say, and I told my team leader, you don't say. My team leader is very good. She will okay, तुम बोल दे. I used to say that. कहीं ना कहीं से होनी चाहिए practice. You should speak. And if you're speaking in front of in the meeting in which your vice president is sitting, if your team, your VP is sitting, another other senior member of the company is sitting, and you're speaking in front of them. So I relate. Okay, I have to speak in front of GT also. So let's speak it here. And I was a junior most, so मैंने कुछ गलत भी बोल दिया तो she was like यार अभी भी join किया है कुछ कुछ हो गया होगा. So I was taking the benefit of doubt. I was taking the benefit of doubt कि ठीक है यार कोई बात नहीं. So this was my funda कि अगर नहीं मिल रहा है chance तो कहीं भी. That is good. And what about GP? How you approach the GP? And how GP was I focus on GP and prepare for GP? GP was very important because when I saw in my dossier, like in academy, my GP was attached there. In my squadron book. One thing I like to say, in SSB in which you get recommended, everything goes to the academy. Then whole thing will be attached to your dossier. Like when I reached the academy, the first day itself, adjutant explained us, your every feedback is with us. So please don't do anything funny. Don't act smart. या मैं ये हूँ मैं हूँ, तब पता है मुझे क्या हो तुम. तब तुमसे तुमसे 15 दिन पहले पहुंच गया मेरे पास है ना. एवरीथिंग तुम इवन मेडिकल ऑल मेडिकल एग्जामिनेशन एवरी बॉडी पार्ट मेडिकल इज वेरी नेसेसरी. तो मेडिकल तो हमें दे दिया जाता है कि टेक यू टेक बिकॉज दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन एकेडमी में होता है. तो फॉर दैट पर्पस वो हमें दे देते हैं. बाकी वो उसी में स्टेपल होता है. वो स्टेपल निकाल के हमें दे देते हैं. बाकी वो ले जाते हैं. तो देन आई सो ओके एवरीथिंग इज रिटन देयर. So and GP is comes with your ACR also. It will completely attach to yourself. So GP में you have to complete the GP. Like Okay. GP रुकना ही नहीं चाहिए. और GP should be very like उसमें priority wise होता है ना. So what I did, there are different styles. What I did, sort according to priority wise. Write the time, estimated time, how much time you are going to solve this, and like speed depending on the road. This type of road, it's a metallic road or it's a kacha sarak, or and you have to also connect like. And again, you don't have to become a hero in the GP. If Okay. you are making any assumption, right, you're taking help from like villagers, you're taking help from local, you're taking help from local police, right? If there is like if there is mention that there is a village, why don't you take help from villagers? है ना? Act like officer na. If you are on duty there, so you can't Right. follow everything. You just Yes, exactly. you call the sarpanch, you call the pradhan of the village, and you obviously will take help. Like how the police officer take help. Not everything he solve, na. He take help from other people. So please do also take help from and solve in limited in that given amount of time, and solve very. If you do systematic, if you do right priority wise structure, speed, time, kacha sarak, pakka sarak, you use every resources. Like whatever the resources given, you must have to use. You can't leave one resource and go to the villager. Hmm. This will give the impression that you have one thing you are using, you're not using one resource directly going to help for which is not written. So it will give very bad impact. So my GP, I did this structure. There is a very good structure on Quora. You Okay. write only how to write GP. I
आई बिकॉज अब रिकमेंड होना है तो तुम सब कुछ करते हो, you do everything. For the GP, I write on Google, यार कुछ मिलता है Quora पे कुछ मिल जाए. So there is a very good structure written in Quora. I followed that, and I Okay. can share you the link also. And Sure. everybody, anybody who can write it, who will get the first link that only, because that's a very structured, very good written on Quora. So I followed right. It will be, and came under the limited amount of time also. So I wrote first only, and then, and in the GP discussion, try to start it. Try to initiate. And the moment you will initiate, start the discussion. If you will start the discussion, if out of 4 problems you have given solution to the one problem, it shows a very, because the moment you will start it, the GT will start writing it. Okay. And if he is writing your name first or in front of your chest number, it gives a very good impression. Because in the conference, some of my friends were there. So they said that they are discussing about my GP part. They asked question about my GP in TGC also, and in Navy board also. Like they are asking about how you get the solution. Approach He the gave GP. some unique solution. So if you can start and try to correlate. मतलब GP में ऐसा नहीं होना चाहिए कि solution ही ना निकले last Okay. में. It's very, very GP, okay. that's very important. A group discussion में नहीं निकले चलेगा. That doesn't matter. And बस solution निकलना many चाहिए. times हाँ, but GP में जब solution ही निकालना हमारा aim है. If we have to find the conclusion, वही नहीं निकल रहा है, that means we all failed. We failed as a team. So you can't fail as a team. और अगर नहीं निकल रहा है, give your solution. Raise your hand, give your solution. But there should be solution. Okay, great. Sir, you want to say anything about GP now? Like anything you left with? No, GP, what I have covered is you have to prioritize and you will be in the time limit. Okay, And great. the GP discussion, you should start and finish it. Reach Okay. to a conclusion. Okay, so the conclusion, that's a thing you should take care of, and especially for GP. Okay. Now, sir, can you just let us know about outdoor tasks, especially that PGT, HGT, FGT, command task, individual race, and whatever, like you Okay. have two boards. So what strategies you think this should be a good strategy? So for outdoor tasks, honestly, I have did not very much because I was working and I don't have any resources to do practice or outdoor tasks. Okay. So and my outdoor task was my weakness also. But I had a friend who used to send me. I don't know from where he got of pictures of outdoor tasks, the real pictures. Okay. He sent me a PDF copy. Like I said, na, if you want to do something, सब जगह हाथ पर मारते हो. ऊपर कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं मिल जाए. So he sent me a PDF in which सारे pictures थे, and there was a picture of some coaching institute also. So we used to discuss कि इसको कैसे बांधेंगे तो ऐसे बनेगा. Like so I don't know if that was helpful or not, because in real SSB or the SSB in which I got recommended, the task was completely different. But there was only 3 things. The 3 support was there. You have to somehow make 2 support to go from one place to another place. This is the whole concept of any task. Labor especially. Uh, there's only if you want to make a fatta very stable, there is a 3 things. You have to make 2 things stable. You will able to go one with it. Sometimes even for a one support also you can go, but most of the times you have to tie it to place. So I don't have so much experience and don't have to say much about these outdoor group. And how the Sorry, teamwork, task. okay, fine. How the teamwork work, especially for HGT, PGT, progressive group task, and half group task, like how it should be. Like they should be like some people say, "Fatta mal uthao," okay, well, then "Fatta mal uthao, balli mal uthao," and don't lift the load. What do you want to say about it? Like how is No, it teamwork or like? if if you're getting the idea, go ahead. If you're not getting the idea, जाके time waste नहीं करने. Many times ना, mostly this is for repeaters. जिनके पास उनको नहीं भी आता, they think कि आगे जाएंगे तो हो जाएगा. वो आगे जाते हैं, now उनको समझ में नहीं आ रहा, they are getting confused, और वो कहीं से कुछ भी बांध रहे, पीछे से someone giving a good idea also, so he is not implementing. And what you notice, if someone is giving good idea, na, the GTO will notice. And so if from behind also if you're getting good idea, GTO is, because ये उसका काम है. ये बात जब मैं सर्विस में तुमके समझ में आया कि ये काम होता है उसका. For him, ये मुझे लग रहा है हर हफ्ते वो यही कर रहा है कि आइडिया ढूंढ रहा है. उसको पता है कि कैसे इस प्लेस जाते हैं. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टाइमिंग द रोप, ही अंडरस्टैंड तो हो जाएगा. एंड इफ द मोमेंट यू तुम पीछे से रह के भी बोलते हो कि इसको ऐसे कर सकते ऐसे करते, ही समटाइम्स ही आल्सो से कि हाँ तुम आगे आओ, तुम पीछे जाओ. तो if you have speak up only, you have a genuine idea, or otherwise help the group.
take rope, give balli, or help. At least you can help in time. Normal knots बांधना तो सबको आता है. So you can help in time. कहीं कुछ उठा के देना है. If you're not getting the idea, just help in the team building. This will also very much helpful. And there is also snake race now. That snake race completely for team building. Because when the DIPR, the scientists came to our academy, he said, snake, how you judge the team building? Only snake race is completely for team building. We don't write much in snake race. Either he has team building or not. So try to, you know, और कुछ लोग होते हैं जो उस पे जो देयर वाज अ वॉल, उस वॉल पे चढ़ जाते हैं, देन खींचते हैं. दैट्स यूजलेस पार्ट. स्टे ऑन ग्राउंड. खुद चढ़ के खींचना, दो तीन लोग मिलके खींच दिया, दैट तुम्हें लगता है ओ जो बंदा देख रहा है वो हाउस देखो तो चार पांच ड्यूटी होते हैं, सारे ड्यूटीज उसी वक्त खड़े होते हैं, दे ऑल आर नोटिंग डाउन. So please stay on ground, help everyone from ground, because that shows more you know left behind. And there is a Chetwodo motto, and if you read the Chetwodo motto, your self, you have to keep yourself very behind and send all the team ahead. So try to send all the team ahead, then you go last. So I followed this. मैं चढ़ा ही नहीं दीवार पे. I was like, मुझे पता है वो खुद चढ़ जाने के बाद खींचना इजी है, और वहां पे ऐसा लगता है कि यू आर helping the team, but you're not. You're just showing off that you're helping the team. So actually help the team. The man who is assessing is, he knows everything. I know everything. ये बात मेरे दिमाग में, the man, ये दिमाग में जैसे ही आ जाएगा ना कि I cannot surpass the system. I cannot fool the system. The moment we will start doing our honest thing. 90% candidates who go for SSB, they try to fool the system. And this also I got a feedback from the SSR. The moment you start trying to fool the system is so robust. नहीं कर पाओ. चीज है उसमें लिखा हुआ है. You can't do this. So do honestly. Many times ऐसे होता है जो बिना प्रिपरेशन के कोई बंदा गया होता है and he got recommended in the first attempt. Not because he's very, उसने वही किया जो कहा गया. हाँ, दिमाग नहीं चलाया. ज्यादा बुद्धि नहीं चलाई. If you start using your brain, you start showing off कि हाँ मैं ऐसे करूंगा, मैं उसके हाथ पर खींचूंगा और उसको पकड़े रहूंगा. So no, you do your job. If the man who is standing there knows everything, वो एक नजर में उसको पता चल जाता है. दो तीन बार वो check. First he get the impression 2-3 times, and in outdoor then he checks. In command task he checks is it confirm or not. Like in my command task, very simple. My command task, I went there and the SSR told me you have to go from this place to this. I just put a patta and he went there. I said, thank you very much, you can go. इतना ही था मेरा command task. But I was in every group. There was 11 members in my group. I was in the 10. Everyone called me. And he asked me question, why everyone is calling you? So there, not because I was very good. I was previously recommended. So everyone has an impression, इसको लेके जाएंगे तो क्या पता इस बात. They're calling me for themselves. And the SSRs also know. So I told them honestly that they had an impression that I obviously got recommended, so I will come, I can help. But actually, subordinates काफी कम help करते हैं. And the moment you start helping, you again know. GT knows कि क्यों बुलाया है. हाँ कि ये इसको क्यों बुलाया है. So GT, और मुझे वहाँ honestly बोलना पड़ गया. मैं वहाँ ये नहीं बोल सकता था कि हाँ I'm very good, I'm this, that. No, sir, they had an impression that I'm already recommended, so I can help them. I'm like, okay. So हर बार ही मुझे बुला रहे थे. GT was like standing there. And he was like, at the last, he called me and he said, there is nothing left for you. This is the task, complete it. And he started looking other way. He started taking his coffee. मैं पार करके उस तरफ आ गया. And he said, completed, go. He didn't write anything. So I was like, either ये पूरा पास कर चुका है, either वो मुझे बोल चुका है इसको नहीं लेना. तो उसने देखा ही नहीं. और he was very much confident कि जब फट्टा ही डाल के इधर से उधर जाना है, तो कोई भी कर लेगा. तो assessment हो चुका था मेरा, I guess. Like God knows, like things happen very, sometimes uncertainty things are very uncertain, especially in SSBs and all, right? Anything happened. But that is the reason they are calling in multiple times. में ठीक idea मिल जाएगा, उसको पता होगा, मान लो कि फंस जाते हैं. Sometimes it happens, right? Okay, I think sir, we are done with our GTO part also, psych GTO. Now we can dive into interview. Okay, so can you let us know about your interview part? Or like what was your key take away from both the interviews, especially for TGC and for this? Both were same or different? How it was like? How it went? And what mistakes you did in your previous interviews, which you corrected in those interviews where you got recommended twice? Yes, please. So I gave 2 TGC interviews. First interview went for 1.5 hours. And yeah, it was very long interview. I was called at 7 in the evening because there were the other interviewing officer was on leave. So only president was taking the interview on that day. So everyone is giving interview to the president. So at 7 I went inside.
and the interviewer was standing, and he was in shorts, like half pant, and in chappal, and he was, so I got impression in mind, ऐसा था तो मैं भी चप्पल में आता तो comfortable होता, मुझे तो सूट वूट में बुला लिया, and he Hmm. was starting laughing, मैं बोले, अरे यार, तो I was little bit devoted, ये serious भी है कि नहीं है यार, ये ऐसे ही बुला लिया कि, so and it started and it went for 1.5 years. So the moment he started the rapid fire, again I prepared for the rapid fire. Internet, every rapid fire is there. तो जैसे ही उसने रैपिड फायर बोला, मैं याद कर, ये नंबर 2 वाला रैपिड फायर है। मैं आंसर देना शुरू किया, थर्ड क्वेश्चन, बहुत सारे रैपिड फायर है ना इंटरनेट पे, Hmm. तो मैंने बहुत सारे याद किया, ये नंबर 1 रैपिड फायर है, इसमें पहले फैमिली फ्रेंड से पूछते हैं, फिर एजुकेशन पे जाते हैं, Exactly. ये सेकंड रैपिड फायर है, इसमें इसमें वो पहले ही आ जाते हैं ऑक्यूपेशन पे, मैंने Hmm. सबके आंसर प्रिपेयर कर गया था, द मोमेंट आई स्टार्ट गिविंग आंसर, ही स्टॉप मी इन थर्ड क्वेश्चन, ओके होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, उसके बाद उसने वो जो रखा था उसने साइड रखा, नाउ ही स्टार्ट टॉक, मतलब यार अब ये गड़बड़ हो गया, मतलब वो जो फ्लो होता है ना, रटा हुआ होता है वो, तो मैं पूरा रट लिया था उसके बाद उसने फिर मतलब। वो घुसना शुरू किया, हाँ वो, Hmm. ही गॉट द आइडिया, आई आल्सो गॉट द आइडिया कि ही गॉट द आइडिया कि अब ये बंदा प्रिपेयर हो गया है, इसको अब ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि रैपिड फायर के बीच में घुसेंगे तो मुझे रैपिड फायर के काउंटर क्वेश्चन भी मैं करके गया था, अगेन वही 300 स्टोरी वाली, कि मैं समझ गया। करके गया था बेटा, जो कर सकता हूँ वो करके जाऊंगा, बट एग्जैक्टली। उसमें मैं, हाँ, उसमें मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू कन्विंस हिम व्हाई आई वांट टू ज्वाइन, हम्म। उसने बोला कि द मोमेंट ऑफ इनकम टैक्स यू आर पेइंग, ये वो, यू वांट टू सॉल्व द नेशन, पेइंग टैक्सेस इज आल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम, ओनली 1% इन द कंट्री पे टैक्सेस, so you are in the top, already in the top 1%, why you're coming to this, and I was not able to convince him, and इसी बात पे वो 40 मिनट 45 मिनट बहुत लंबा खींचा, about my brother, why you're not convincing your or motivating your brother to join armed forces, my brother is not interested in armed forces, or he will not join, so I did this mistake to openly बोल दिया, in interview you have to be smart, राइट। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मुंह मुंह कितना खोलना है, चुप रहना है, नहीं पता तो सॉरी सर नॉट अवेयर, यू कैन, आई विल लुक इनटू दिस, आगे बढ़ जाओ, हाँ अगर correct। तुम्हें आता भी और लग रहा है इसमें फंस जाओगे, तो तो देयर मत इज कर। नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ सेइंग आई डोंट नो, हम्म। sorry sir I'm not aware, there is no negative marking for that, the negative of saying negative, wrong answer, so i I did, I did some mistakes about family, how you help your mother, so we were like, from last 1 year you have not met your mother, so how you can help your mother, एंड आई वाज नॉट एबल टू से कि मैं मिला हूँ माँ से, मैं घर नहीं गया, मेरी माँ मुंबई आई, आई वाज नॉट एबल टू कन्वे दिस, ओके। इन द नेक्स्ट इंटरव्यू आई वाज टू कन्वे दिस कि मैं घर नहीं गया हूँ, पर आई मेट माई मॉम, ओके। शी केम टू मुंबई, आई मेड, शी लिव्ड विद मी, तो ऐसा यू हैव टू बी स्मार्ट, एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर पीआईक्यू, पीआईक्यू एवरीथिंग, उसने उसने फिर रैपिड फायर नहीं पूछा, पर वो क्वेश्चन तो पीआईक्यू से पूछेगा, बिकॉज एवरीथिंग माई डिटेल्स इन पीआईक्यू, तो एग्जैक्टली। ही रेड एवरीथिंग फ्रॉम पीआईक्यू, पीआईक्यू से सब कुछ पूछते पूछते एवरीथिंग, मतलब यहाँ तक कि तुम्हारी हाइट है, तो व्हाट डू थिंक अबाउट हाइट, हाइट कैसे बढ़ती है वो फंसाने के चक्कर में थे, ही वाज लाइक द मोमेंट ही विल गेट द आइडिया कि आई टोल्ड यू ना इन फर्स्ट इंटरव्यू आई वाज एक्टिंग स्मार्ट, एक्टिंग हम्म। ओवर स्मार्ट, अरे हम्म। पूछ भाई क्या पूछेगा, तो ही वाज लाइक कि अब इसको पढ़ाते इससे पूछते हैं हम हार्मोनल, तो ही वेंट टू हार्मोनल लेवल, व्हिच हार्मोन्स आर इन्वॉल्वड, द मोमेंट आई स्टार्ट टू गिविंग आंसर, ओके लीव इट, what the color, your color, what the color of your face, what is this color, I'm like, this is gehua type, or I'm little blackish, okay, what do you think about black, is the black people are bad or good, uh, random, हम like यार ये तो फिर he made me realize कि you are not smart, हम्म। there is only one smart person in the room, इट्स मी। and that is not you, क्लियरली टू यू। yeah, he made me realize until 1.5 hours he was like, and then he said, okay, go, तो उस एंड आई केम वेरी एग्जॉस्टेड, तो थक के आया, इतना बोलना बोलना बोलना, नेक्स्ट टाइम आई अगेन कॉन्टेक्टेड टू साइकोलॉजिस्ट मैम, एंड शी वाज लाइक इतना ही बोलना ही नहीं होता है, तो फिर जब आता है तो बोलो चुप रहो, तो इन द नेक्स्ट सीजीसी आई वाज लाइक ओके सर आप पूछिए क्या पूछिए, एंड ही हाँ। वाज, आई वाज वेरी क्रिस्प, आई वाज वेरी असर्टिव कि हाँ ये होगा, एंड आई वाज वेरी क्रिस्प, why I want to join, I am made very very strong and very honest thing कि क्यों ज्वाइन किया, then he went to, why went to IIT, then उन्होंने कहा सर IIT मतलब continuation of my life, I can't stop my life after 12 na, and if I good at physics chemistry math I will go, so it was a continuation of life, again job is a continuation of life, I never left preparation of armed forces in between, Correct. and the moment I got the chance, I started filling the form, I started appearing it, then he told me why you given the serious entry or other written exam, I was not, I gave one, and I made real I realized that no, I can't,
clear it, because there is a vast knowledge of social studies, English needed in that. I don't have this much of time. I can't leave the job also because I have to support my family financially. So So you well, I have to certified balance officer everything. in all levels, like जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे आपने satisfy कर दिया उनको TGC. So like हाँ, you've been to the I same board or different board? Allahabad board only second time? Allahabad बोल रहा हूँ. Or officer was same or different? Different, I believe. No, different. Officer Officer definitely will be system different. officer So what was the gap in between your first Allahabad board this attempt and the second one where you got recommended? 4-5 months. 4-5 months. हाँ, 4-5 months. 4-5 महीने वाला डिफरेंस था अप्रोक्सीमेटली. तो उसी बोर्ड से आप रिकमेंड हुए. तो अब बताओ उसमें जब इंटरव्यू तो उसने यू जस्ट टैकल वेरी स्मार्टली एंड यू आंसर्ड टू द पॉइंट. यू नॉट जस्ट बीटिंग अराउंड द बस. So ठीक है. interview went for 40 to 45 minutes here, like half of the previous one. The time was very less, and this interview was also taking 1.5 to 2 hours long. So this time also interview was कि नहीं, जिसको खींचना वो खींच रहा था. Correct. और वो 2 घंटे में भी जो नहीं फंस रहा था, he will get good marks or he will get recommended. But in 45 minutes I made sure कि मैं यहाँ आया हूँ join कर. He was like, you were telling also what I do of you. You are of no use of in army. है ना? I can't select you. Then I made it like, sir, I can be useful. I can't run 20 kilometers in a day, but physical things I can improve on. I can run 5 kilometers a day. I run every day, so I can run every day. He said कि तुम नहीं दौड़ सकते 25 किलोमीटर. There is a cross country of 20-25 kilometers in a, you can't do. Sir, I understand I can't do, but this is a training part of things. If you will train me, I can do this. Because from 2 years back, I was not able to run 1 kilometer also. Right now, I'm learning 5 kilometers every day, so I can improve upon. तो ऐसा नहीं कि हीरो बनना है कि हाँ कर रहा हूँ दौड़ रहा हूँ, फिर वो स्पीड पूछने लगेगा कितना दौड़ते हो. अगर नाउ आई वेंट टू द एकेडमी, आई नो कि अगर कोई 12 किलोमीटर दौड़ रहा है तो सेम स्पीड पे नहीं दौड़ना है. हर टाइम की अलग अलग स्पीड होती है, हर टाइम की अलग अलग ब्रीदिंग पैटर्न होता है. वो पूछना चालू करेगा, यू लाई, देन अगेन ही विल थ्रो यू आउट. तो मैं आई डोंट रन. पकड़ लेते हैं वो एक्चुअली. अगर आप बोल रहे 5 किलोमीटर मैं दौड़ता हूँ डेली तो उसका टाइम पूछेगा. ठीक है, आप किस टाइप हाँ, पे वो फिर कितना 30 मिनट लगता है, 35 लगता है, 40-45. ज्यादा बोल दोगे, ज्यादा टाइम लगता है तो बोलो स्लो चलते हो. ज्यादा तेज करो बोला इम्पॉसिबल है. तो लपेटना शुरू कर देगा. तो यू कांट ट्रस्ट द थिंग्स लाइक चीज के पैटर्न होते हैं अपने, स्पेशली लॉन्ग रन के लिए. वही लॉन्ग रन के बहुत स्ट्रक्चर्ड पैटर्न होते हैं. इफ यू डोंट फॉलो दैट पैटर्न, तो उसमें वो पता चल जाता है कि ये कैसे भाग पाएगा. लाइक इन एकेडमी यू हैव टू रन 12 किलोमीटर क्रॉस कंट्री. तो देयर इज अ पैटर्न कि हाँ शुरू में तुम्हें अचानक अगर इफ यू गिव ऑल इन, फिर 2 किलोमीटर बाद यू विल नॉट, दिमाग ही काम करना बंद कर देगा. And after that you have to between of the time like 4 kilometer to 8 kilometer, you have to make your speed very constant. Auto mode में जाने देना होता है. जा रहा है, you have to एक What is speed the में average time Harsh, usually for academies to complete the 10 kilometers? Average time, average range? like cross country 12 kilometer is at 55 to 65 minutes. If you are below 55, you will. Okay. मतलब means 45 to 55 minutes to take for 12 kilometers, right? हाँ, 12 kilometers. If you are below 45, like in 40, 41, you are in the top run. Like Okay. first in closer में आ सकते हो आप. And you are a good runner. कुछ लोग आते हैं उसमें, है ना. और नहीं जो 45 like 55 के प्लस जा रहे हैं, like 60 के आसपास जा रहे हैं, then it's like कि you need to improve. तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, और there is some injury, so there is a lot of reasons. Yeah. So average time is 50 minutes. Like I came in 50 to 53 minutes. So I was not a good runner, but I was in No, sir. finishing in 4th, 5th, and 12th. As per like I'm civilian, right? So I used to run approximately. I took 42, 43, 44 to 45 minutes when I was running 10 kilometers. Treadmill पे बोल रहा हूँ मैं. Ground की बात is a different thing. वैसे Ground is completely 24-25 minutes लग जाते थे मेरे को usually 5 kilometers. और उसमें भी क्या होता है ना कि वो दोपहर में हो रहा है. So like we little bit diverted from the topic. Okay. So like any other difference you like they ask you some technical questions also as a TGC entry. Both are technical entry for you. They did ask you any technical questions, especially for the interview. What are the questions they ask you? They didn't ask you technical questions. Not a single technical question. No technical question. Okay, only specially technical. उसमें yeah. हाँ, from me, and one question about Newton's law in Kolkata SSB. कि Newton's second law को explain करो, how the formula F is equal to ma derived. Newton's rule. So I explained it in 2-3 minutes, and he said okay. So and he was not asking too much about technical question to any other candidate also. And if I asking also very basic question in the Navy, like what is buoyancy, how buoyancy works, how Archimedes principle.
Okay. These things only. Okay, sir. So I think we can move toward. I think similar questions were asked in both the boards where you got recommended, Navy and Army, Allahabad. Navy was a little bit of different. Allahabad, both of the interviews almost same. My response was different, so that's why interview response changed. My Okay. response in first was different, so it went to 1.5 hours, and it was my response very subtle, very clear answer, very cut to cut answer. So it went for 45 minutes and interview recommended. So, but in Navy, again there is a 45 minute interview, but the interview was more of related to my family. There was no rapid fire, and Okay. mostly to the repeaters who are going to SSB 4 5 times, they stop asking rapid fire. Okay. So they were not asking me rapid fire. They were about your family, like about your he went to our my maternal uncle, अपनी मामा से कब मिले थे last, उनसे कैसे बात होती, तुम्हारी मामा क्या करते हैं. We don't very much interact with our maternal uncle ना. एक बार बड़े हो जाते हैं हम 10वीं 12वीं के बाद, तो नहीं बात करते मामा से, वो नहीं होता. तो और फिर उसके बोलता है कि अच्छा मामी भी हैं, उनसे कब बात हुई लास्ट, उनके बच्चे कजन, उनसे क्या किस तरह की बात होती है. अगेन ही वेंट टू आवर माई, दिस वाज मदर साइड, माई फादर साइड, तुम्हारे चाचा से कैसे रिलेशन है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, किसी कभी तुम्हारे डैड और जो चाचा उनमें झगड़ा हुआ, या मम्मी से कभी कुछ बहस हुई. तो वो पूरा फैमिली में घुस गया अंदर तक. नहीं, उसने कुछ तो पकड़ा होगा माई साइकोलॉजी, ने उसने कुछ हार्ट टच किया होगा जहां उसको लगा थोड़ा बहुत में डाउट, ही विल ट्राई टू क्लियर द डाउट, आई बिलीव. ऐसा वो हाँ. कोशिश करेंगे. So most of the thing was related to my family. After some basic question, why want to join, and what is the motivation behind it. And at last, he was like, you have to give three improvements what we do in this SSB, like Kolkata SSB. You have to give. If you not give SSB, I will not leave you, allow you to leave the room. So I gave three. First, I gave the in the waiting hall there's a chair, and the wheel of the chair is not working, like this is broken. Hmm. Whether the wheel of the chair is broken, and second, in front of the mess there was a cat, and cat has given 2 3 kittens. So there was a kitten, and there's no proper place to keep the animals there. So I gave, and third was like there was a lot of crocodiles in when you go for the Navy SSB, इन खिड़की से देख सकते हो बहुत सारे क्रोकोडाइल सब जाते रहते हैं. तो वो कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल मछुआरे हैं ना, वो उनको पत्थर उत्थर मार रहे होते हैं. तो अरे ये देखिए यहाँ के लोकल पत्थर, तो वी शुड आल्सो बी डूइंग. तो कुछ ऐसा नहीं, ये मुझे पता था कि एसएसबी में अगर गलती बताई तो उनमें गलती मत निकाल दूंगा आपको प्रोसेस की थी. You gave very smart answer, like useless things which is not वेरी even स्मार्ट. considered to the board. बोला ठीक है यार, ये तो बोल हाँ कर रहा है, ठीक है. Smartly you handle this. Good. वो बस फॉर द सेक ऑफ सेइंग सेक, डोंट से कि हाँ आपका खाना बढ़िया नहीं था. वो हाँ. खाना सब बढ़िया होता है ना. व्हील चेयर कोई वाला वाज 22 का लाइक रोटी टचिंग देता है ओनली. तो तुम टच करके निकल गए व्हील चेयर की बात करके, वो व्हील वाला पूरा टेढ़ा है. हाँ. लाइक बिल्ली और क्रोकोडाइल का तो वही कोई वही. agree नहीं करता. बोला ठीक है यार, सब कुछ अच्छा ही है, मतलब ठीक है. दे वांट टू बी हैप्पी. हाँ गुड गुड, स्मार्ट वही स्मार्ट. वही. तो वो व्हील चेयर एक्चुअली वो टूटा हुआ था व्हील, मतलब कुर्सी में 3 नीचे व्हील्स होते हैं ना, तो उसमें 2 ही व्हील था, एक व्हील नहीं था. जो भी बैठता था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता था, अनबैलेंस हो जाता था. तो उसमें मैंने बोला कि उसमें व्हील नहीं है. तो ठीक है, यू कैन गो दिस मच स्मॉल, बट ऐसा नहीं कि हाँ कुछ बड़ा ही बोलेगा अकोमोडेशन ठीक नहीं है, रूम में एसी नहीं है, तो खान पे कुछ लोगों ने बोला है कि एसी होनी चाहिए. हाँ, ठीक है, ऑल द बेस्ट, फाइंड नहीं एसी समवेयर एल्स. नहीं, it should be like this only. Okay, sir. So I think we can move towards your conference. How was your conference? Both the conferences. You can say about the TGC now. Then we can move towards the Navy. We can wind up in 5 6 minutes. Okay. Yeah, please. TGC was very simple. How was your stay? Tell me something improvement again, and thank you very much. Only 2 3 questions. Okay. In Navy SSB, it went for 20 minutes. Okay. Again the interview started, and वहाँ मेरी मॉम के बारे में पूछा गया, जो बोला I gave a smart answer in Navy की why you are how you are getting this much of leave, like from the last 1 year you have 4 5 SSB given, every time you are getting screened in. So in the last 7 months you have taken 5 leaves, so 30 35 days leave. How you are convincing your manager? तो आई टोल्ड कि मेरे पास 50 दिन की लीव मिलती है कॉर्पोरेट में, एंड आई एम मैनेजिंग दैट, आई एम नॉट टेकिंग अदर लीव. मैं पार्टी करने नहीं जाता हूँ, या ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ, बाकी मेरे दोस्त ट्रिप पे जाते हैं, मैं ट्रिप पे नहीं जाता हूँ, और मैं घर भी नहीं जा रहा हूँ अभी 7 8 महीने से. देन अगेन इवेंट टू जो क्वेश्चन अलावा घर नहीं जा रहे हो तो फिर घर वालों से मिलते कैसे हो, फिर मम्मी को सपोर्ट कैसे करते हो. देन आई वाज लाइक नहीं, मम्मी को सपोर्ट करता हूँ, मम्मी आ जाती है मुंबई मेरे पास, जब भी मुझे Mhm. मिलना होता है तो मम्मी के, तो मतलब नहीं नहीं यहाँ नहीं फंसना इस बार. Mhm. तो दिस वाज अगेन. तो इन इंटरव्यू देन अगेन अबाउट ब्रदर, कि भाई से कैसे हेल्प करते हो, ही यंगर, आर यू मोटिवेटिंग हिम. So again the same question ki, are you motivating him to join armed forces because you are very much motivated? Well, yes, I have motivated him. I have told him the pros and cons.
I have told him what happens is, and this is finally his choice. He will join on. बोले कि you should motivate him. Sir, I am motivated. So ऐसा था conference, and then in conference the last question was like that कि everything is good, but your spoken English is very bad, sir. Hmm. And he told me, I'm like, so, and like you studied in Navoday Vidyalaya, and after that you came to IIT, it's again national institution. Again, you want to join armed forces, you are preparing for this. But why the hell your spoken English is not good? I'm like, sir, I from till 12th I was from government school. As you can see, I'm from government school. It's completely Hindi medium. So, and again, it's from Bihar. Bihar is pronunciation part like everything is same. And he also told me your pronunciation is pathetic. Hmm. Like you I have to decode. इतना खराब भी नहीं था जितना वो बोल रहे थे. But he was telling me that it's completely pathetic. It was very tough for us to understand what he was saying. मतलब, I think he was putting me somewhat in a pressure. So I told you, sir, I'm improving on it. And in the first SSB, when I gave for NDA, I was not able to speak one line in English. And right now, I have given whole 45 minutes interview, and again from last 20 minutes, I'm speaking to you in English. So I think that's an improvement, and I am you're right. There is still a scope of improvement. I will see. Exactly. You handle this smartly. Good, very तो good. वो हंसने लगे फिर. Uh, He's like, okay, now you can. Again, you were like, any improvement? मैंने सर, I've already told in the interview. अब फिर से उसी 3 improvement को बता दिया मैंने. मतलब कुछ नया दिल छेड़ने की जरूरत नहीं है. बता दो improvement. लेकिन फिर how was the food? Now you can. तो mainly family, मेरे mom और brother के जो around Ganga generation घूमना है कभी. उसी से. हाँ, तो अब पता नहीं क्यों नेवी बोर्ड में दे आर नॉट लिविंग विद फैमिली, बार बार फैमिली फैमिली कर रहे थे. कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ मैटरनल पकड़ा साइड, होगा पैटर्नल. स्टोरीज में. दे गॉट सम, कुछ तो हुआ होगा, नहीं दे विल नॉट बी स्ट्रेसिंग टू मच. ठीक है, नथिंग रॉन्ग, क्लेरिफाइड देन इट्स ओके. बिकॉज हो जाता है व्हेन यू फोकस ऑन समथिंग, थिंग्स विल तो पीछे चली जाती है काफी चीजें. दिस थिंग्स. वाज. Okay, sir. So, हाँ, so what about TGC? How was the TGC conference? Army with this Allahabad one? TGC conference, the both of the TGC conference very simple, only 2-3 minutes. Like Okay. they are very much clear in previous attempts also. Like previous in these three psych, like the man is clear, or in which I got conference out, they are very much clear in that also. He is not going to qualify. So in both attempts, and in the TGC in which I got recommended, he said, okay, the 2-3 question: how was your food? How was your stay? And improvement. And that's it. It went for 2 minutes. Okay. I think, yeah, sir. So, anything else you would like to suggest to the candidates about your whole journey of SSB recommending? Got recommended twice. Three points you would like to tell the candidates which they can focus on to get recommend in their future attempts. Just you can go for it. First is SSB is not a exam based process. For like call up letter आया तो तैयारी शुरू की. This Hmm. doesn't work. Hmm. This is the most important thing. SSB is a continuous process. You are preparing. In बीच में call up letter आ रहा है. You are going to attempt it. Again, वो कोई बात नहीं. If you fail or pass, you keep trying. You know that 3 महीने बाद फिर से आएगा call up letter. फिर से I have to go for SSB. So you have to keep trying. As an any examination, either SSC or anything you prepare or UPSC you prepare, you keep preparing continuous for 2 years, 3 years. So if you give your whole heart and soul for 6 months continuous without thinking about the SSB आएगा तो मैं दौड़ना शुरू करूंगा, this doesn't work. एक महीने में दौड़ के कुछ नहीं होता. If you keep running for 3-4 months, then you will see improvement in yourself. So it is a continuous process, and this is the most important thing. Second thing, keep working on your writing skills and keep reading newspapers. And newspaper helps you to give different ideas in GP, basically in GDs, group discussion. If you have ideas, then because if you speak good points now, you will feel confident. And Exactly. सारा खेल कॉन्फिडेंस का है. सब लोग तुम्हें देखेंगे, हाँ यार ये इस बंदे उस पूरा भसड़ मचा हुआ है, इट्स फिश मार्केट, एंड यू गिविंग अ लॉजिकल पॉइंट, एवरीबॉडी विल स्टॉप एंड लिसन टू यू. If you give you a very logical point, and then what happen na, they will pick your point. Now your point will be discussed from next 2-3 minutes. They will discuss your point only. So they are not getting the points. You are getting the point because your point Right. is getting discussed from 2-3 minutes. So get a varied idea. Don't stubborn कि हाँ ऐसा ही होता है. No, Hmm. please take a, okay, you Keep have you trying. should have both. Start reading the editorial part of the in editorial part is the plus minus both given in the newspaper. Start reading that. You will your thoughts should be broadened. So these things, and last, don't worry about the results. Okay. If you are working hard, हाथ पैर मार रहे हो तो Hmm. जाएगा. ऐसा नहीं हो तो नहीं जाता है ना. वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि सारी कायनात पीछे पड़ जाती है ना, सिद्ध चाहो तो.
तो पड़ जाती है ट्रस्ट भी, बिकॉज कुछ इंसिडेंट्स हुए कि मुझे लगा कि यार वो मैम मिल गई मुझे। अब ये भी हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं कि मैम की वजह से गया हूँ, पर आई आई हैड अ बिलीव कि शी विल हेल्प मी, नहीं, she did है ना। actually. एंड दैट बिलीव, हाँ, एंड दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स, फाइंड द ड्राइविंग फोर्स, कीप डूइंग। आई आई हैव सम फ्रेंड्स इन सर्विस आल्सो जो 15-16 अटेम्प्ट्स में आए हैं, एंड दे डिड अमेजिंग इन द एकेडमी। जो Great. फर्स्ट अटेम्प्ट में आया ही वाज लाइक कि नहीं, जो 16 अटेम्प्ट में आया ही वाज लाइक कि नहीं यार अब यहाँ से नीचे नहीं जा सकता मैं, आई विल शो हु आई एम, है ना। Exactly. तो That is important. he was doing great, so don't Okay, worry sir. if you're not getting. Mm-hmm. Please finish. There are other, there was other ways also, other like one of my friend who was 10-11 attempts, he didn't got recommended, he went to CAPF and he is assistant commandant there. So you learned all about the journey, और इतना ट्रैवल करते हैं एसएसबी के चक्कर में कि पर्सनालिटी ग्रो ऑटोमेटिक होने लगती है, Yeah, yeah, you that is keep important. meeting to new people, so yes. Okay, sir. So, last question I would like to ask you, like, why, like, you chose TGC, like Navy Short Service Commission over TGC Permanent Commission? First was कि I was working in corporate and I want to explore, like I want to serve the nation. But the question is कि after coming to IIT, I also had it in corporate. So now the I thinking यार, if after 10 years I have a chance, and ये 10 साल बाद क्या होगा, the timing changing very fast. 10 Exactly. साल बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, है ना। अगर मैं पीसी ले लेता हूँ, then leaving the service will be very difficult for me, क्योंकि जितना मुश्किल है फौज में घुसना, उससे ज्यादा मुश्किल निकलना फौज, है ना। Correct. दे विल नॉट लीव यू, एंड है ना, वो बहुत मुश्किल है, ये मुझे आने का पता था, दे विल नॉट लीव यू। तो मैंने सोचा कि इफ आई हैव अ चांस, टेक अ चांस इन योर हैंड। अगर क्योंकि एसएससी के बाद जो पीसीबी मिलती है ना, इफ यू वांट यू कैन गेट इट। तो Exactly. अब मुझे लगा कि ये देखते हैं 10 साल बाद क्या होता है ना। मैंने दोनों जगह काम किया है, तो आई बस ऑप्शंस ओपन रखने के लिए मैंने सोचा कि ठीक है। एंड सेकंड चीज, आई गेट अ वेरी गुड ब्रांच इन नेवी, इट्स अ नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर। सेल नहीं कर रहा हूँ, मतलब सेल मैं अपनी मर्जी से करूंगा, नोबडी विल फोर्स मी कि सेल करो, एंड बिकॉज शिप लाइफ इज बिट डिफिकल्ट। Still, you can say, like, if you wish to get to on Navy, any boat, any, हाँ, like, as per the permission or आई whatever I have आई in Navy. कैन गो ऑन बोर्ड, but my branch is like, and my branch is I have to travel abroad like Russia, Yes, yes, Germany, I know. because the armaments is coming from different countries. तो Yes, हम like लगे we ठीक है यार, have in करके देखते हैं। Rustam movie, right? In Rustam also हाँ use हाँ, multiple एग्जैक्टली, inspection, right? The same thing you have to do multiple countries हाँ or multiple एग्जैक्टली। carries. That's good, very good. Any Sash, now the Sash, there's a last question. Any improvement for us, like we can work on ourselves? Like you have been a part of our PPT session also, and I think GD part also, GD was you to lecture it also. Do you think anything Yes. which we can improve on? Any suggestion would be taken into consideration? Maybe it's a negative part. What do you think? How was your experience with us? No, no. The session was good, especially the dress code part. Dress code was very different from, because many online sessions was going on. So dress code was very much helpful. It actually gives us confidence. You have to make us familiar to the actual environment, because it's an online session. How you can in online make the candidates familiar to the what exactly happened in the session. Secondly, timing should be like रात, अभी भी रात को 10 बजे के बाद ही होती है। वो 10, 9, 10, 11, 12, 1 अभी मैं फ्रांस में था तो उस टाइम पे कुछ मेरा टाइमिंग चेंज था काफी, बट अभी तो क्लास बंद है वैसे तो। अभी दोबारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होता है, मतलब इट्स नॉट रेगुलर, लाइक थिंग्स आर ऑफ राइट नाउ, तो अभी कंटिन्यूटी नहीं है चीजों में। अच्छा, बट होती तो रात में भी है, टाइम अगर ऐसा हो कि बच्चे अवेलेबल रहते हैं 9 बजे के बाद ही रहते हैं, मेनली सब ऑफिस से आते हैं, फ्री होते हैं, तब तब टाइम रहता है वो। हाँ बोलो, क्या बोल हाँ, रहे थे आप? और नहीं तो मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, सुबह में, जैसे सुबह 4 बजे से, करते जिसको हैं आना लेकिन होगा 4 बंदे, बजे आएगा। नहीं आते हैं, बहुत रेयर है यार। क्योंकि जब मैं फ्रांस में था, 6 बजे मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, तो इंडिया में 10:30, 11 बजते थे, 6:30, 7:30 बजे। तो मैं 10:30, 11 बजे क्लास लूंगा उनकी एक दो, फिर मैं सुबह फिर बुलाऊंगा उनको क्लास में मॉर्निंग में 4:30, 5 बजे, क्योंकि उनके यहाँ इंडिया में जब 4:30, 5 बजते थे, मेरे यहाँ 11, 12 बजते थे। ठीक है, लेकिन वो तब भी नहीं आते थे, तो मतलब दिक्कतें होती थी, बट कम बच्चे आते थे। दैट वाज अ टेक ऑन फॉर माई, अदरवाइज मैं तो यार लड़ने को तैयार था। एनी अदर थिंग्स शर्ष यू वांट टू से? No, I can't you do anything for practicing for stories or like this? You can start, or you can hire some psychologist. You यस can यस। start that, because only PPT and group discussion are a very small part of it. It is less than one third of that. You can start with other part. At least you can give suggestions about how to write PIQs, what ओके, to write in PIQs, and about it. So not complete, but those who can, what can be done online. You could do
Rest everything is good. The session was very helpful. Okay, sir. So the meeting is about to over now. Okay, sir. So I would like to say thank you so much and congratulations on your recommendation. And I think you joined the Navy already. So I think we now we can wind up. So congratulations again. Okay, and I wish you all the best and serve the nation to your best. Okay, and maybe after this you will forget me. I'll forget you. Things will change over time, but maybe you will touch in all the time. You can contact me through LinkedIn anywhere. Okay, then sir, thank you so much. Take more time from your busy schedule. Thank you. Jai Hind.